Dear students, welcome to the course of leadership. I'm your course instructor Shahzad Khan Durrani and I'm a lecturer at the Institute of Business Studies, KUST campus. Today our topic is charismatic and transformational leadership. This is the outline for our today's lecture. First, we will try to learn and understand the basic concept of charismatic leadership theory. So for this, we will understand the definition of the charisma. Then we will talk about the types of leadership defined by Burns. We will talk about the transformation leadership perspective, and at the end, we will try to understand the model of transformational leadership. So let's start with the definition of the charisma. Charisma, by definition, is a special personality characteristic that gives a person a superhuman or exceptional powers and is reserved for a few, is of divine origin and results in the person being treated as a leader. What is charisma? सो कैरिज्मा इज़ एक्चुअली अ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक. ये एक ऐसी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दैट इज़ हीरोइक, दैट इज़ यूनिक इन नेचर, एंड बिकॉज ऑफ दैट और उसकी वजह से दैट पर्सन इज़ कॉल्ड ए लीडर. लोग उसको क्या मानते हैं? लीडर मानते हैं उसकी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से. मैक्स वेबर, ही इज़ अ सोशियोलॉजिस्ट, ही टॉक्स अबाउट कैरिज्मेटिक अथॉरिटी. वो कहता है लाइक देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ authority that the people possess, and one of them is called charismatic authority. charismatic authority वो authority होती है जो एक बंदा accept किया जाता है just because of the charismatic personality or charismatic qualities that that person have. Then we have the legal authority. Legal authority is just like, for example, there are certain rules and regulations जो कि आपको इम्पोज करती है, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर इम्पोज की जाती है एंड यू हैव टू फॉलो दैट. सो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द लीगल अथॉरिटी. द लीगल अथॉरिटी इज नॉर्मली विद द स्टेट, द कंट्री दैट यू आर लिविंग इन इट. सो इट्स लाइक, फॉर एग्जांपल, there are different rules and regulations that are present in our country. For example, आप जब एक red light को cross करते, so that's actually a penalty, and who is imposing that penalty on you? That's actually the legal authority that a person has. Then we have a traditional authority. ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो एक रिवायात के मुताबिक चली आ रही होती है. फॉर एग्जांपल, इन इंग्लैंड द रॉयल फैमिली दे हैव द अथॉरिटी, सो दैट अथॉरिटी इज एक्चुअली कॉल्ड द ट्रेडिशनल अथॉरिटी. Charismatic leadership theory, our next slide. Charismatic leadership theory was presented by House in 1976. So charismatic leadership theory is when a person acts in a unique ways that have specific characteristic effects on their followers. एक बंदे की ऐसी खुसूसियात, ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जब वो असरअंदाज होती है उसके फॉलोअर्स पर, एंड दे वांट टू फॉलो दैट पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ द characteristic that that person has. What are some of the characteristics? So let's see the table that we have. Personality characteristics, behaviors and effects on followers of charismatic leadership. charismatic leadership की कुछ personality की खुसूसियात कौन कौन सी है? So first one is dominant. That person is actually dominant. He is very confident person. He is forward and taking the step forward in everything. हर एक चीज़ में आगे कदम बढ़ाना, हर एक चीज़ में आगे बढ़ना, फ्रंट पर रहना, ये एक पहचान होती है, एक खुसूसियत होती है किसकी? एक charismatic leader की. The second one is desire to influence. He has a desire in his heart for his society, for his country, for the whole world. उसकी एक ख्वाहिश होती है सारे लोगों के लिए. Self confident. This is the very important topic, very important word that, or you can call it adjective for a charismatic leader. He is a very self confident person. He is believing on himself. अपने ऊपर यकीन रखना, self confident रहना. Strong moral values. That person has a strong moral values. एक अखलाकी रिवायात होती है इसके पास, and he is not going to compromise on that.
उससे क्या बनता है, उस बंदे का बिहेवियर बनता है। किस तरह का बिहेवियर होता है? सेट स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल, एक रोल मॉडल होता है, सही है ना, एंड एवरीबडी वांट्स टू फॉलो दैट पर्सन। द सेकेंड वन इज शोस कॉन्फिडेंस, हर एक चीज़ में कॉम्पिटेंट होता है, he has the skills, he has the abilities. The next one is articulate goals, goals को define करता है, how you can achieve those goals, how you can get to those goals, right? Communicate high expectations, he is trying to communicate that you can do it, right? That you can do it, you can achieve it. खुद भी फॉर एग्जाम्पल उस एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरता है, एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज फॉलोअर्स इन ऑर्डर टू गेट दोज गोल्स. The next one is expresses confidence. Confidence को जाहिर करता है from his gestures, from his postures, from his personality. And the next one is arouses motives. हदफ होते हैं उसके पास, goals होते हैं, and he is trying to remind it every day or in every hour to the followers, right? And the next one is effects on followers. What are some of the effects that followers are getting it? So this is the most important one. Trust in leaders ideology. उससे क्या होता है, लीडर की आइडियोलॉजी पर, उसकी नज़रिए पर एतमाद करते हैं वो लोग, सही है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सेइंग दैट Gandhi, he is a charismatic leader, so Gandhi has their own followers and people were believing on him. Belief similarity between leader and follower. This is the most important one. Between the leader and follower there must be a similarity. Similarity होगी तो वो उसको follow करेगा. If there is no similarity exists between the leader and the follower, it means there is a problem, right? So both of their beliefs that must be the same. Unquestioning acceptance. इस तरह की personality होती है, वो जो भी कहता है, for example, everybody is going to accept it. लोग उसको कबूल करते हैं, because for him, for others, he is like a role model. जब वो एक role model बन जाता है, so you are going to accept everything that that person is saying. Affection toward leader. लीडर की तरफ क्या होती है, एक हमदर्दी होती है, एक affection होता है, एक love होता है, clear? And then obedience, ताबेदारी होती है, right? They are going to follow every word of him. What he is saying, they are going to follow it. Identification with leader, leader के साथ अपने आप को जाहिर करना, clear? And this can be like with different symbols or different signs that they are doing it. For example, if leader has a long hair or beard, then they are doing the same as well, clear? Emotional involvement, एक emotional involvement होती है, clear? Emotional involvement जब होती है, so you are going to accept everything blindly. हर एक चीज़ जो है इस तरह ही आप accept करते रहते हैं, because आपकी एक emotional attachment है. In most of the time such emotional attachment that is present in religious for example leaders. For example, our Holy Prophet ﷺ, we have a very great emotional attachment to him. अगर कोई उसके बारे में कोई भी for example गुस्ताही करता है तो हम फ़ौरन for example हाजिर है. Why? Because we have a really great emotional attachment towards him. And then heightened goals. क्या होते हैं, उसके गोल्स जो है वो हाई होते हैं और उस गोल को हाईलाइट किया जाता है हर वक्त. इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया जाता है हर वक्त, क्योंकि लीडर याद दहानी कराता है एंड द फॉलोअर्स आर गोइंग टू फॉलो इट. Then there are some later work when we talk about the charismatic leadership theory, and that work is done by Shamir, House and Arthur in 1993, and these are some of the recent studies that were conducted by these sociologists or these authors in the charismatic leadership theory. What are they? Transforms followers self-concept, try to link identity of followers to collective identity of the organization. जो फॉर एग्जांपल फॉलोअर्स की आइडेंटिटी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी होती है, वो क्या हो जाती है, एक हो जाती है, वो दोनों एक हो जाती है. देयर इज़ नो डिफरेंस. फॉर एग्जांपल बाज़ लोग जो है वो क्या करते हैं, फॉर देम
the brand is very much important. वो अपने आप को एक branded, for example, उस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं. For example, if you like a car, so you want to have a similarity with that brand. You want to have some attachment to that brand. Clear? And then forge link by emphasizing intrinsic rewards and de-emphasizing extrinsic rewards. Emphasize किया जाता है intrinsic rewards rather than extrinsic rewards. Extrinsic rewards means, for example, you are not going for promotion, you are not working for the money, you are not working for the profit, but you are working for something, your internal satisfaction. That is actually the intrinsic rewards, not the extrinsic rewards. Throughout process, leaders क्या करता है? Express high expectations for followers. Most important one, help followers gain sense of self confidence and self efficacy. इस पर हमने डिटेल से बात कर ली कि ये चीज़ें आपको वो लीडर सिखाता है. Now, what are some of the types of leadership that is defined by Burns? We will talk about leadership, and we already did in the class about the types of leadership. When we talk about the types of leadership, there are various theories that exist about the leadership. For example, there are trait approach, there is a skill approach, there is a situational leadership theory, there is a team approach as well, or you can call it team leadership. But here Burns defined three main types of leadership, and you can call it the modern approaches towards leadership as well. The first one is called transactional leadership. Focuses on the exchanges that occur between leaders and their followers. एक्सचेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाता है कि तुम मेरे लिए इतने प्रोडक्ट्स सेल करो तो मैं आपकी सैलरी में इंक्रीज लाऊंगा. सो दिस इज वर्ड ट्रांजैक्शनल, समथिंग रियली ट्रांजैक्शनल. आप मुझे वोट दो तो मैं आपके लिए ये काम करूंगा. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, transaction के through, for example, you are going to exchange thing between the leader and follower. There is an exchange of things. The next one is transformational, a very modern and a very good concept of the leadership. Transformational leadership, process of engaging with others to create a connection that increases motivation and morality in both the leader and the follower. एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें इंगेज किया जाता है लीडर को और फॉलोवर को, ताकि क्या हो सके, यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन बिल्टअप हो सके ताकि दोनों में मोटिवेशन हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ द लीडर इज मोटिवेटेड, in the same way the follower is motivated, and both have the morality. This is the very recent research that is going on about the transformational leadership, and that is actually called the morality approach in the transformational leadership. morality पर कोई compromise नहीं किया जाता, standards को बरकरार रखा जाता है in order to achieve the goal. We will discuss the transformational leadership in detail, inshallah. Pseudo-transformation leadership. Pseudo-transformation focuses on the leader's own interest rather than the interest of his or her followers. यहाँ पर क्या किया जाता है, लीडर के अपने इंटरेस्ट को जो है उस पर फोकस किया जाता है, फॉलोअर्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है. एंड दिस इज कॉल्ड सोडो. सोडो, इट एक्चुअली मीन्स फॉल्स, राइट? सो ये एक नेगेटिव काइंड ऑफ लीडरशिप है जो कि नॉर्मली बाज़ लोगों में पाया जाता है. दे आर फोकसिंग मोर ऑन देयर ओन विल रादर देन द विल ऑफ द फॉलोअर्स. ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप पर्सपेक्टिव को अब डिटेल से हम बयान करने जा रहे हैं. जैसा कि हमने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप क्या है, ये एक प्रोसेस है. तो किस तरह का प्रोसेस है? Transformation leadership is a process that changes and transforms individuals. Individual को change किया जाता है, उनको transform किया जाता है, मुकम्मल तब्दील कर दिया जाता है, और उनकी सोच को for example extrinsic reward से हटाकर intrinsic reward पर लाया जाता है. Influence, यहाँ पर क्या होता है? Influence. Transformation leadership involves an exceptional form of influence that moves forwards to accomplish more than what is usually expected, right? उनसे इस तरह का काम लिया जाता है that is usually expected. किससे? followers के. And they are working for you, right? Because you are transforming them. You have a really great influence on your followers. So this is the second element, which is the most important one. Some of the core elements which are very much important for transformation leadership, and they are emotions,
concerned with emotion, transformation leadership concerned with emotions, इसका ताल्लुक emotions के साथ होता है. values अक़दार के साथ होता है. ethics, it's more about ethics. On ethics, there must be no compromise when we talk about transformation leadership. Standards, there is zero error. There is no chance of error when we talk about the transformation leadership, and long term goal को focus किया जाता है. For example, transformation leadership में leader फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं करता कि किसी को ब्राइब करे, किसी को रिश्वत दे के फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी तरफ माइल करे और शॉर्ट टर्म गोल को वो फोकस करे. नहीं, शॉर्ट टर्म गोल के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म गोल के लिए जो है लोगों को तैयार किया जाता है. एंड देन द encompassing approach. Transformation leadership describe a wide range of leadership actually, influence where followers and leaders are bound together in the transformation process. both दोनों जो है वो bound होते हैं in that transformation process. So it's a two-way process. It's a wide range of leadership approach. Next one, when we the last one is our last slide, the model of the transformation leadership, which is presented by Boss in 1985. He expanded and refined version of work done by Burns and House. Burns और House ने जो काम किया था leadership को, उसको थोड़ा सा explain किया है, and it included more attention to followers rather than leaders' needs. Followers को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी है rather than the leaders needs. उसने कहा ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज मोर अबाउट द फॉलोअर्स रादर देन द लीडर्स, क्योंकि फोकस तो सारा फॉलोअर्स पर है. दे वांट टू प्रिपेयर द फॉलोअर्स इन ऑर्डर टू अचीव द गोल एंड सो दैट दे कैन गेट सक्सेस. सेकंड वन, सजेस्टेड ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कुड अप्लाई टू आउटकम्स that were not positive, and it is for example अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप पर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जो आउटकम पॉजिटिव नहीं आ रही है, you can apply the transformation leadership and you can get a very good performance out of it. Describe transaction and transformation leadership as a continuum. ये क्या है? एक कॉन्टिनम है. ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होती है जहाँ पर टू वेज प्रोसेस है, दोनों पर फोकस किया जाता है. ट्रांजैक्शन लीडरशिप में एक ट्रांजैक्शन है, एंड वी हैव अनदर काइंड ऑफ लीडरशिप दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्फेयर लीडरशिप. लेजिस्फेयर में जो है ना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीडर्स अपने विल को देखता है. वहाँ पर कोई जो है फोकस फॉलोअर पर नहीं होता है. एक्सटेंडेड हाउस वर्क बाय अब यहाँ पर हाउस वर्क को किस तरह इसने एक्सटेंड किया है, जो कि मॉडल है. गिविंग मोर अटेंशन टू इमोशनल एलिमेंट्स एंड ओरिजिन्स ऑफ कैरिज्मा. मोर अटेंशन कहाँ पर है? इमोशनल एलिमेंट्स. सो इट्स मोर अबाउट द इमोशनल एलिमेंट्स एंड द ओरिजिन्स ऑफ द कैरिज्मा पर ज़्यादा बात होती है. यानी ये एक पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप. सजेस्टेड करिश्मा इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. करिश्मा तो ज़रूरी है बट इट्स नॉट सफिशिएंट, ये काफ़ी नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के लिए, बिकॉज करिश्मा लीडरशिप इज़ जस्ट a personality characteristics, but transformation leadership is a more like a broader perspective. It's it takes many things in their own custody, or you can say in their own continuum. Model of transformation leadership, transaction leadership and laissez-faire leadership. इस पर हमने डिटेल से बात कर ली. सो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप मोटिवेट फॉलोअर्स बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड बाय रेजिंग कॉन्शियसनेस अबाउट द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एंड आइडियलाइज्ड गोल्स. गोल्स को फोकस किया जाता है, वैल्यूज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. ट्रांसेंडिंग सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ अ टीम और ऑर्गेनाइजेशन. सही है ना. ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्फ इंटरेस्ट को साइड पर किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट सबसे पहले रखी जाती है. एड्रेसिंग हायर लेवल नीड्स, और हायर लेवल नीड्स को जो है, जो नीड्स सबसे ज़रूरी है, जो सबके फ़ायदे के लिए है, जो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए है, उस पर फोकस किया जाता है. दिस इज़ द समरी फॉर आवर टुडेज़ लेक्चर. वी टॉक अबाउट charisma. So charisma is a heroic characteristics, a unique characteristic. We talk about charismatic leadership theory.
We talk in detail like the characteristics, the behaviors, and the effect of followers of the charismatic leadership theory. Then we discuss three types of leadership in detail: transactional, transformation, solo transformation. Then we talk about the transformation leadership perspective, and then we discuss the model of the transformation leadership. That's it, I think so. These are the references from which I made my slides. Thank you so much. Stay home, stay safe, dear students. Thank you.